Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your teacher Kainat. How are you? I hope you are enjoying good life. Today we are going to learn our fifth lecture of science. Unit 10, Energy. There is a question on your screen which we are going to read today. Why do living things need food? जानदार चीजों को खुराक की जरूरत क्यों है? There is an answer on your screen. Food gives energy to living things to grow. खुराक जानदार चीजों को बढ़ने के लिए तवानाई देती है. You also read with me. Why do living things need food? Food gives energy to living things to grow. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन के साथ साथ इस यूनिट की एक्सरसाइज भी करेंगे, करेक्ट ऑप्शंस और फिलिंग द ब्लैंक्स. करेक्ट ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस. So first of all, the ability of a body to do work is. जिसम में काम करने की सलाहियत है. एनर्जी तवानाई, फोर्स ताकत, मैटर. तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी तवानाई. The ability of a body to do work is energy. जिसम में काम करने की सलाहियत तवानाई से है. The food gives energy to. खुराक तवानाई देती है. Everything on the earth. जमीन की हर चीज को. All living things. तमाम जानदार चीजों को. Only non-living things. सिर्फ गैर जानदार चीजों को. तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल लिविंग थिंग. तमाम जानदार चीजों को. द फूड गिव्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स. खुराक तमाम जानदार चीजों को तवानाई देती है. प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द डैश टू मेक फूड. पौधे खुराक बनाने के लिए डैश से तवानाई इस्तेमाल करते हैं. मून, चांद, एयर, हवा, सन, सूरज. स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरज, सन, सूरज. प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड. पौधे खुराक बनाने के लिए सूरज से तवानाई इस्तेमाल करते हैं. We can melt a metal with the energy from. हम तवानाई से धातु को पिघलाते हैं. फूड खुराक, फायर आग, एयर हवा. स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है फायर आग. We can melt a metal with the energy from fire. हम आग की तवानाई से धातु को पिघला सकते हैं. The greatest source of energy for us. हमारे लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है the moon, चांद से, the sun, सूरज से, the sea, समुद्र. तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है the sun, सूरज. The greatest source of energy for us, the sun. हमारे लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया सूरज है. स्टूडेंट, इसके साथ हम फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेंगे. आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग साइंस वर्ड्स. स्टूडेंट्स, हमें कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं. फूड, वर्क, एनर्जी, सन. तो इनकी हेल्प से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. मोस्ट प्लांट
grow in the light of the dash sun. Most plants grow in the light of the sun. ज्यादातर पौधे सूरज की रोशनी में बढ़ते हैं. Electricity is a source of dash energy. Electricity is a source of energy. बिजली तवानाई का एक जरिया है. All animals and plants need energy to dash work. All animals and plants need energy to work. तमाम जानवरों और पौधों को काम करने के लिए तवानाई की जरूरत है. We get energy from our dash food. We get energy from our food. हमें खुराक से तवानाई मिलती है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस यूनिट का एक क्वेश्चन नंबर 4 किया है और इसके साथ करेक्ट ऑप्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स भी की हैं. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है और उसका होमवर्क करके उसकी तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करनी है और करेक्ट ऑप्शंस और साइंस वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आपने रीड करनी है. अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अगले लेसन के साथ. अल्लाह हाफिज.